कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हम गिफ्ट प्रतियोगी से करें। जय महोदय डॉक्टर जयनी महाविद्यालय से एवं कि मां सरस्वती की पूजा अर्चना और विजय के साथ आज के इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करें। अच्छा आप करोगे क्या? तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको उम्मीद है कि कोविड-19 एक ऐसा पैंडेमिक है जिसमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जो उसे छूता था। रनिंग बॉडी हो या अन्य दूसरी गतिविधियां सभी चीजें कोविड-19 के अंदर प्रभावित किया। बदलते हुए परिवेश में शारीरिक शिक्षा की स्थिति के ऊपर हम ये 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उपस्थित डॉक्टर सुनीता विद्वान आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज प्रयागराज से आप आई हुई हैं। उत्तर प्रदेश आई हैं और मुख्य अतिथि के रूप में और रिसोर्स पर्सन के लिए हमारे यूनिवर्सिटी में मैं चाहूंगा कि डॉक्टर ध्वनि के साथ स्वागत करें। जो हमारे प्राचार्य डॉक्टर तिवारी की करें जिनके निरंतर मार्गदर्शन और दिशा निर्देश से हम ये सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप युवा वर्ग की आपने सारे डिपार्टमेंट को एंगेज कर दिया है, सारे डिपार्टमेंट को कॉन्फ्रेंस मिला, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल। मुझे क्या बताते हुए शर्मता हो रही है कि हमने कोविड-19 पीरियड में भी ऑनलाइन मोड में या कॉन्फ्रेंस और सेमिनार आयोजित किए। आखिरी साल माइक और वीडियो चालू आप डिपार्टमेंट का फिजिकल एजुकेशन के लिए आरसीएस लॉ वाले फिजिकल एजुकेशन उनका भी होगा के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अतिथि देवो भव को प्रचार करते हुए नामकरण करता हूं। सबसे पहले
डॉक्टर मुझे मानदेव जी को यहाँ पे आए और आज के मुख्य अतिथि उनका विज्ञापन था उस उद्देश्य से कर रहे हैं। कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे हैं सरकार महोदय के द्वारा क्या नहीं है जो लगाने से करना है तो कुछ उद्देश्य से कर रहे हैं। अतिथि और हमारे छोटे भाई के रूप में यहाँ पे डॉक्टर अजय धन्यवाद के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करता हूँ उनका स्वागत कर अभिनंदन। स्वागत के तरीकों ऊपर मैं ये जो पहले से जुड़े हुए हैं तीन दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा आपके सामने रखता हूँ। इसके तुरंत पश्चात टेक्निकल सेशन में पहला सेशन हमारा हुआ डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर श्री रामकृष्ण फिजिकल एजुकेशन स्वयं सम्मेलन हम 5 साल के का व्याख्यान सुनाएंगे। ये चाहता हूं कि उनका भी आप हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें और तालियों के साथ स्वागत करें। आज के दूसरे सेशन में हमारे अतिथि के रूप में मंच डॉक्टर अनिता निजाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रयागराज का व्याख्यान सुनेंगे। उनका उसमें भी कल हमारा टेक्निकल सेशन 10 बजे शुरू होगा तो उसमें आप होगा डॉक्टर दीपक बंगाली एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी टीचर ट्रेनिंग रिसर्च चंडीगढ़ पंजाब का हम जाएगा उन्हें सुन करना आनंद दूसरे सेशन में 10:45 से 11:30 बजे तक डॉक्टर मानवी से मार्डिकर हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइंसेस नागपुर एवं शुरू तीसरे दिन और आखिरी दिन फर्स्ट सेशन होगा 10 बजे से लेकर 10:45 तक डॉक्टर गौरव असिस्टेंट प्रोफेसर विद्यार्थी सोने को और लास्ट सेशन प्रैक्टिकल सेशन होंगे 30 तारीख को 10:45 से 11:30 बजे तक मीट मार्गो वो ऑफिसर से रहते हैं गवर्नमेंट ऑलरेडी कॉलेज है हम उनसे लाभान्वित होंगे उनका व्याख्यान उनसे बात करेंगे। तो इस तरह से जो स्कीम ऐसा लेवल कॉन्फ्रेंस में आप सभी लाभान्वित होंगे और उनसे लाभ प्राप्त करेंगे इसलिए आशा करता हूँ और इनके साथ आज के कार्यक्रम का शुरू मैं आह्वान करता हूँ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर महाविद्यालय सत्र 2021-22 अंतिम कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ से भी 1 जुलाई से लेकर 30 अंतिम इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में ग्रुप में डॉक्टर सुनीता और हमारे से जुड़े अजय धन्यवाद आप लोगों का मैं परिवार को से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट
के द्वारा अगर हम महाविद्यालय के नेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार करना है तो हमारा 5वां और ये निश्चित रूप से सभी विभागों का ये दायित्व है वो नेशनल लेवल पर किसी भी स्तर पर छात्र छात्राओं के बहुत ही विकास के लिए उनके जागरूकता को शांत करने के लिए उनको अधिक से अधिक प्रशिक्षित करने के लिए विषय शिक्षकों को हम आमंत्रित करें और शारीरिक शिक्षा विभाग ने जो टॉपिक दिया चेंजिंग सिनेरियो ऑफ फिजिकल एजुकेशन आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक हाइब्रिड मोड सबसे बड़ा परिवर्तन तो आपको हाइब्रिड मोड और यदि अपने पीछे नजर डालेंगे तो कुर्सियां खाली यही जो है कोरोना के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि आपको पहले कॉन्फ्रेंस या सेमिनार का आयोजन होता था पुराने लोग बैठे हैं आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती थी बहुत मेहनत करना पड़ता लेकिन कोरोना ने हमको बताया कि आप इंटरनेशनल वेबिनार भी कर सकते हैं और हम लोगों ने इंटरनेशनल वेबिनार भी किया अब्रॉड में दुनिया जो है नेट के माध्यम से आपके आईफोन के माध्यम से आपके मोबाइल के माध्यम से होती है आप गूगल में सर्च करके सारी जानकारियां आपके पास तो कोरोना में सबसे बड़ी परिवर्तन किया है इंटरनेशनल सेमिनार कॉन्फ्रेंस ये सब जो कल्पना नहीं कर सकते आपको बहुत बड़ी धनराशि चाहिए बहुत माध्यम चाहिए और लाखों का बजट चाहिए लेकिन आप इंटरनेशनल वेबिनार कर सकते हैं और एक हमारे इंटरनेशनल वेबिनार तो हम लोग भी हमारे पास इसलिए बोलना पड़ता है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस होते हैं कि गवर्नमेंट बजट से उसका उद्घाटन किया थोड़ी सी कोविड-19 के बाद थोड़ी सी क्या बदली वैक्सीनेशन का दौर आया वैक्सीनेशन अब सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं सब लोगों ने वैक्सीन लिया है फिर एक नई शुरुआत हुई हाइब्रिड कोड अब हाइब्रिड कोड में आप देख रहे हैं कि ऑफलाइन भी लोग आएंगे जैसे आप डॉक्टर सुनील जाएंगे जैसे छत्तीसगढ़ की हमारी बेटी है प्रयाग जानकारी देने के लिए हमारे कॉन्फ्रेंस में जो टॉपिक है अपना व्याख्यान देने के लिए हमारे डॉक्टर अजय लाडवाड़े का ऑफलाइन फिर आपका जो टेक्निकल सेशन होगा वो ऑनलाइन स्ट्रीम में बाहर से जो हमारे एक्सपर्ट हैं हाइब्रिड मोड परिवर्तन है परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं और क्या परिवर्तन आया आपने देखा कि आपको घंटों आपको एग्जाम आना परीक्षा में बैठकर तो इतना पता और ऑनलाइन एग्जाम में आपको भी लगा होगा कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं मैं आपको चर्चा कर रहे थे डिग्री हो जाएगी डिग्री हो क्या ये मानकर चलिए आप कहीं पर भी इंटरव्यू में जाएंगे तो वो बोलेंगे कि भैया ये आपकी जो डिग्री है कोविड वाली इसको डिग्री को आधार करके आपको बताइए कि आपने क्या किया क्या आपको मिला आप बताइए उसके आधार पर आपके भविष्य का निर्धारण मैं मुझे हम लोग संभवतः सारे बताएंगे और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा बहुत अच्छे टॉपिक के लिए बहुत अच्छे आयोजन के लिए मैं शारीरिक शिक्षा विभाग की टीम को बधाई देना चाहूंगा महाविद्यालय परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 3 किलोमीटर की यदि दौड़ हो रही है तो 3 किलोमीटर उसमें ऐसा दौड़ा उसके हम फिनिशिंग लाइन 30 जून के पहले हमने प्रयास एक ऐसा आयोजन करना चाहिए जो फिजिकल एजुकेशन का आयोजन है इसलिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा धन्यवाद सीधे आज के कार्यक्रम को प्रोजेक्ट की व्यवस्था रिसोर्स पर्सन को पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं और हमारे बच्चों को संबोधित करें और आज की कॉन्फ्रेंस का
कोविड-19 का सिचुएशन हम कई लोग ऑलमोस्ट सभी लोग ये सोचते हैं कि कोविड का जो दौर आया ये हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान देगा और सारे लोग बस रोते रहते थे कोविड की वजह से ऐसा हो गया ऐसा हो गया, ताकि हम उसका पॉजिटिव साइड नहीं देखें। ये कॉन्फ्रेंस ही देखो क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन का जमाना आ गया है, हम घर पर बैठ के बहुत कुछ कभी कल्पना नहीं की थी कि हम घर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, टीचर्स घर पर बैठ के क्लासेस ले सकते हैं। ये हम बचपन से नहीं सीखते हैं, हमने स्कूल जाना है और चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो स्कूल पे भी एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन ये टाइम ऐसा आया है कि हम घर पर बैठ के क्लासेस भी ले सकते हैं, बच्चे पढ़ भी सकते हैं। कितना उसको यूज करते ये हमारे पर कितना यूटिलाइज करते ये नहीं है कि सारे बच्चों को हम स्कूल के बच्चों को भी देखते हैं वो जो एग्जाम्स होते हैं तो वो क्या करते हैं या तो कॉपी खोल के बैठते हैं या अपने फ्रेंड से एक मोबाइल में फ्रेंड से बात करते हैं और एक वीडियो कि वो अपने मोबाइल को ऑफ नहीं कर सकते या कोई और टैब को यूज नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं अपने ऑप्शंस बना करके या एक मोबाइल में बात करते हैं और एक जगह से वो एग्जाम देते हैं। लेकिन एज ए पेरेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को समझा पा रहे हैं कि ये गलत है या कितना बच्चा उसको पढ़ पा रहा है, अभी नहीं सोचे कभी नहीं सोचे सोचते हैं ठीक है जैसे चल रहा है चलने का हम सब अपने काम से व्यस्त हैं, तो ये काम है। लेकिन उसको अगर पॉजिटिव वे में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलता है इसकी वजह से। कोविड की वजह से हम लोगों ने सीखा है ऑनलाइन को कैसे यूटिलाइज करना है, ऑनलाइन मोड को कितना अच्छा, कितने लोगों ने इसकी वजह से ऑनलाइन के थ्रू अपना व्यवसाय बनाया है, दे आर अर्निंग। क्या हम नहीं कर सकते? बहुत से लोगों ने अपना क्लासेस लिया, बहुत से लोगों ने अपना ऑनलाइन मोड से फिजिकल एक्टिविटीज करवाया, बहुत से लेक्चर्स करवा रहे हैं या कुकिंग क्लासेस चला रहे हैं, मतलब अलग अलग जिसके जो कैपेसिटी का जितने लोगों ने कोशिश किया, हर कोई अपना अपना इनकम अर्न कर रहे हैं। हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उसको हर एक चीज को पॉजिटिव हर एक चीज को यदि हम पॉजिटिव वे में ले, हम अगर रोते रहेंगे तो कभी अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। कोविड हो चाहे वैसे अगर हम अपने फिजिकल फिटनेस के लिए अगर नहीं रहेंगे, जैसे अब आज का चेंजिंग सिनेरियो फिजिकल एजुकेशन का कोविड-19 का हम फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं क्या है और क्या करते हैं फिजिकल सोशल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करते हैं और इन क्या करते हैं लोगों को अवेयरनेस देना है फिजिकल एक्टिविटी के क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम कभी कभी नहीं करता है ऐसे फिजिकल एजुकेशन क्या हम दे रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि हम लोगों को अवेयर करें कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है, कितना अर्थ है अगर हम फिजिकली एक्टिव करेंगे। और जब हम अपनी बात करेंगे, हम आज के डेट में भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। 2018 में आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फर्स्ट एशिया पैसिफिक ट्रिपल जंप और गोइंग टू वर्ल्ड रिलेटेड है और सिल्वर मेडल हासिल किया। लेकिन आज के दिन में आप लोग को लास्ट 21 में आई वाज अफेक्टेड विद कोविड हुआ था, लेकिन उसमें से बाहर निकलकर ध्यान दिया और अप्रैल 22 में हमने पार्टिसिपेट किया और ट्रिपल जंप में और हैमर थ्रो में हमने मेडल किया, गोल्ड किया और हैमर थ्रो
खाना है, सोना है, और सबसे ज्यादा लोग होंगे या स्ट्रीट सर्फ में होंगे, राइट? सारे प्रोडक्ट्स को लोगों ने कोविड के टाइम में मोबाइल चलाए, खाए, किसी ने भी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोविड हमें क्या सिखाया? हमें फिजिकली एक्टिव रहना है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ज्यादा स्ट्रेस करता है और वो हमें एनर्जी देता है। अगर हम उसकी इम्प्रूव नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम उसको स्टोर करते जाएंगे और बीमार होते जाएंगे, राइट? जब हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे हम क्या करेंगे? खा रहे हैं और वेट को कम करेंगे, हमने भी बहुत वेट को कम करेंगे और अफेक्टेड भी है। और कोविड से जो निकले बाहर तो हमने कुछ खाया, वो रिकवरी के लिए हमने खाया, लेकिन हमारा फिटनेस था, इसकी वजह से हम एक्टिविटी नहीं कर पाते। फिर भी हमें लगा कि जब हम अपने एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे तो क्या कौन देगा? डॉक्टर और मेडिसिन, राइट? और लाइफ लॉन्ग हमें मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो हमने अपने ऊपर ध्यान दिया, इसलिए हमें लगता है कि किसी को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। हम किसी को काम करें अपनी फैमिली के लिए, राइट? फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यदि हम अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे, बच्चों के लिए कुछ बैठे तो हमारा सोचा है, किसी ने भी नहीं सोचा है। सो वी ऑल वर्क ऑन आवर एक्टिविटी को जितना और भी बाकी चीजें, राइट? टाइम शॉर्ट है, थैंक यू मैडम। आज की फर्स्ट टेक्निकल सेशन के लिए मैं डॉक्टर मेरे भाइयों को माइक देता हूं। ओवर टू स्टार्ट टेक्निकल सेशन एंड तमिलनाडु प्रोफेसर श्री ओवर टू। ठीक है। It's honor for me that I get a chance to introduce our guest. I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce the guest for the day. His name is Dr. M. Srinivas, Assistant Professor from Sri Ramakrishna Vishwavidyalaya, College of Physical Education, Coimbatore, Tamil Nadu. Other than this, he is highly qualified person. He has done PGDP in parallel, MSc in psychology, Master in Physical Education, Master in Philosophy, and PhD. Apart from this, many other courses as well. He gets first rank with gold medal in MBA because he gets second rank in MBA. He has many professionalizations like article publication, journal and therapy, paper presentation in international, national, and state level conference, and many others. He has many specializations also including exercise physiology and sports nutrition, physiology and biomechanics, parametric and special Olympics, yoga and adaptive yoga. His specialization in sport and games are tennis, ball tennis, and Paralympic
and a trained knowledge of physical education field. He is a successful person and will be inspired for others. So now I request teachers to address the conference and cast the light of our knowledge about us on mental fitness through physical activities on this national level conference. Thank you, sir. So you can start. Hello. 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 Sir, can you hear my voice? Hello. Hello. Sir, can you hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, share screen is now locked, sir. Kindly open it, then only I can present the presentation. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, you can start the session. Actually, now your screen sharing is locked. Kindly disable it. Screen. Share screen is locked now. I cannot share my screen. Okay. Okay. Screen share. Start. Yes, sir. Yes. It is okay, sir. Yes, sir. So, sir, now can you see my screen, sir? Yes, sir. My audio is okay. Yes, your voice is okay, sir. Okay. Good morning to everyone. Thank you, madam, for your kind words on me. And now I would like to tell my gratitude to Dr. Magesh Diwari, Principal, Vipra College, Raipur, and the dignitaries on the dais and off the dais, and the dear participants, and my friend Dr. Milind Bandeo. Good morning to all. Really, I'm very happy to be the part of this national level conference on changing scenario of physical education after the COVID-19. Especially, we are going to discuss about the hybrid mode. My friend asked me to discuss about, especially in the sports psychology. So here I have selected the mental fitness through physical activities. Actually, the sports psychology, we need not to teach to everyone. Easily we can visible the psychological aspect, the approach aspect from the normal person to sports person. Because for sports person, we need not to teach about the sports psychology. When we will be in the master, when will be the one of the part of the sports and physical activities, automatically we can learn, and without our consciousness, we can get lot of psychological benefits. But at the same time, when you compare with normal persons, they could not get these opportunities, because our physical activities and the sports activities itself, it teach about the how we should behave with others, how we should prepare our mental fitness. So a sportsman and elite or beginner or intermediate sportsman, whatever may be, they need not to go for any special classes. But a regular person, a normal person, a sedentary people must know about the sports psychology. What the current scenario, because when will we be in the part of our physical activities or any sports, we can easily say that the physical abilities, our motor abilities, our physiological benefits can get through involvement in the sports and physical activities. But the mental fitness, the psychological benefits, we could not transfer to the public. That is our
bad luck. Because when the audience or the participants or the general people, they can easily witness the performance of the players. Unfortunately, they could not recognize their psychological aspects, because a sports person psychology differ from the normal person. The sport person have a lot of psychological attributes through the participation in different aspects of competitions. Now we are in the after the COVID-19, we are in the difficult situation. So hybrid mode, it is in all the subjects. It includes our physical education also. In hybrid mode, how can we develop the mental fitness through physical activities through hybrid mode? It is very complicated, but unfortunately, we are in the same situation. So we have to adjust, we have to inculcate, we must adapt to the hybrid mode. Otherwise, our physical education will not move towards to the highest peak. So we must recognize the hybrid mode, and we should change, we should innovate something to take physical education is also a hybrid mode. We can teach to the students, sports persons, and general public also, because all the subjects, it's a concentrate very closely to the subject students. But in a physical education, we are concentrating to the players and non-players and professionals. Especially, we have to concentrate, we have to contribute to the general public, because the fitness of the youth, it very closely related to the physical education department. So if you teach only in the face-to-face mode, we can cultivate. Otherwise, if we have an online mode, we cannot go out. Definitely, we have to go for the online mode. And how can we do the physical education classes in the online mode? It is in our hand. We should go forward. So mental fitness through physical activities, it is our it is my today's topic. And whenever I have a chance to present any presentation, I will start with this 3 to 4 questions are there, because the now we have to teach the physical activity to everyone. What we are thinking, the general people thinks that physical activity is one of the new mode. It is a new fashion, or it is one of the new recreational activity. Likewise, everyone is thinking, because in our developed countries, foreign countries are doing a lot of physical activities. So we have to go for physical activities. Likewise, this tendency, mental tendency is there. So we have to change. So I have a list of questions. When does the baby start physical activities for the first time in his or her life? So I have an answer. This is called mother's womb. So physical activities we need not to teach. In a baby learn physical activities, it won't. It is a inborn quality we need not to teach. So physical activity is compulsory for everyone. It may be a face-to-face mode, it may be a hybrid mode, whatever may be, physical activity is compulsory for everyone. And who is the best PET in the world? I have an answer, that is parents. A physical education teacher need not to teach all the physical activities, because if a mother, a parent, a father, the parents are teaching the physical activities, how we should walk, how we should sit, how we should go forward, everything the parents are teaching. So it is not a new to the world. And which is the best machine in the world? My answer is human body. It's a best human it's a machine in the world, because we have a lot of systems. We have a cardiovascular system, endocrine system, exocrine system, nervous system, excretory system, lots of parts are there, and each and every part, each and every system are working very nicely without difficulties. So the best machine in the world is human body. Sure, okay. What is the free medicine in our hands always?
So when we was in the pandemic, COVID-19 pandemic, everyone, even UNESCO, WHO, and all the associations, they recommended only one medicine for all. It is recognized by everyone. That is called as sports and physical activities. When we were in the pandemic period, everyone told us to do the physical activities. It may be a pranayama, it may be a one physical activity, it may be a yoga, whatever it may be, but we should involve in the physical activities. So this is our background of physical activities. Why do we develop the physical education? This is the background. So we should understand we are not new. We are the forefathers of everyone. We should give lot of things to the society. And what is the meaning of health? The health is the state of complete three aspects. One is physical, mental, and social well-being. So what really we are doing, the health means if you are looking good, your dressing is good, if you are in a good structure, we are thinking that he is healthy. Not. The health means we should have a three aspects. One is mental, physical, as well as social well-being. These are the three important areas we should have. This is called as health. And what is the meaning of fitness? So the fitness is the ability to meet the demands of the environment. All the environment we have to adjust. And what is the meaning of physical fitness? So disease, fatigue, and stress. Importantly, I have to stress on the stress, because in now due to COVID-19 pandemic, and now and before and during pandemic, all the times we have a stress, but the level of stress is different, and the meaning of stress is different, and the reason of stress is different, but we have a stress. So if you overcome the resistance, if you want to overcome the resistance, if you want to avoid the resistance, we need physical fitness. And wellness, the habits, how can we develop our fitness? That is called as wellness. And what way we are going to develop our fitness, that is called as sports and physical education, physical activities. And now we have to develop our physical education to the hybrid mode. How can we do that? Because each and every department, other departments, if you take and if you consider, they have a lot of opportunities to take into the hybrid mode. But unfortunately, we did not develop, we did not expect that. But the COVID-19 pandemic provided a lot of opportunities to go into hybrid mode. So if you have a health habits, physical activities, it definitely we can get the wellness. And hybrid mode we should develop, and face-to-face we should cultivate. And during pandemic, what are the problems we had? Why do we got lot of problems during pandemic? Because of the stress and anxiety. What is the reason behind that? Because the social distancing and the standard, sitting alone, and fear of death, and fear of disease. So these are the reasons we got lot of stress and anxiety. Due to that time, we would not recognize it because we have done some physical activities. But unfortunately, we did not tell about our psychology, because when you compare with a sportsman and the general public during the pandemic period, a sportsman did not get lot of problems in psychologically. But when you compare with the general people, they had a lot of opportunities to go for stress. And I gone through some of the findings. This is one of the findings. It's a recent findings that what is the sports activities before COVID-19 and after COVID-19, the outbreak of COVID-19 and before and after. This is the Korean National Sports Participant Survey. Actually,
In 2019, they have a 60%. But 2020, 6.48% reduced due to the outbreak of COVID-19, because they had a lot of reasons. Because they are worrying about the disease, the spread of the disease, the spread of the COVID-19, and the lack of confidence, and the lack of motivation, confidence, and they have a lot of stress how they can protect from this COVID-19. These are all the reasons the sports participation reduced now. And some of the regular practitioners, they are doing the activity, physical activities in their own. They need not to go, they need not to mingle with the society. They have a fear. So definitely we should give the lot of opportunities in the hybrid mode. There is no chance for escape. So we have to go forward, and especially we should tell about the psychological aspect. What are the benefits? What are the advantages are there due to practicing or due to involving in the physical activities and sports? So we know very well that what are the psychological aspects, mental fitness we can develop. So when we'll be involved in the sports and physical activities, we can reduce anxiety, stress, fear, aggression, inferiority complex, and depression. Here we should think that commonly what we are thinking that the sports, physical activities, it only for the sportsman. It is not that. It does not mean that. Physical activities for everyone. And who is going to participate in the physical activity? Everyone can reduce their anxiety and stress. It will not come for basketball player. It will not come for only for volleyball players, and it will not applicable only for the athletes. It's for everyone. Those who are involving in the physical activities at the sports, everyone can reduce their anxiety, stress, fear, aggression, and inferiority complex and depression. So a lot of scientific evidences are there. When we be involved in the sports and physical activities, we can get these benefits. Because these are the very core points due to the COVID-19. This is a core point for our lifestyle changes. It is a core point for getting all the disorders and diseases like cardio problems. So physical activities and sports easily reduce these aspects. And what are the aspects enhance? Self-confidence, self-esteem, self-control, fighting spirit, concentration, and positive thinking. So one side we can reduce the negative points, and the other side we can increase some of the positive points. Self-confidence can develop through participate in the physical activities, and self-esteem and self-control, fighting spirit. When we were in the pandemic period, we had a fear of the spread of COVID-19, the outbreak of COVID-19. And if we have that confidence, if we have that fighting spirit, we can easily adjust that situation. That is the benefit of participation in sports. So we can easily control ourselves. Then positive thinking. If you affected by the COVID-19, we can have a self-talk. We can easily talk with ourselves. So I have a problem. I have a COVID-19. I have affected by COVID-19. If you think positive, definitely I can come forward. Definitely I can recover from this problem. If you think that, automatically the recovery period will come down. This is the positive of our sports participation. And attitudes. We can develop the good attitudes and win and lose our spirit. Everything we can develop through participation in the sports activities. So these are all the overall benefits when we participate in the physical activities and sports. And we should think that how can we take it into hybrid mode?
the stress management. What is the science behind the psychological benefits when we will be in the sports activities? Because we know that lot of evidences are there, scientific evidences are there, the endomorphin, dopamine, and norepinephrine and serotonin. These are all the important uh, uh, hormones secreted in our body. Automatically, it will help for reducing our stress, and it is maintain our regulating our mood. When we'll be in the stress, definitely it will take it into in a positive mode. And exercise can help the stimulate parts of our brain, because we have a lot of parts. So it will regulate our brain and feel good brain in chemicals. So we have a lot of chemical secretions are taking place when we will be in the physical activities. So it is positive, and it is improve our confidence. We have seen that improve our confidence, and lot the neurotransmitters are released when you exercise. The endomorphin, because the endomorphin secrete automatically the neurotransmitter released when will be in the exercises, and it will reduce our pain and stress. These are the science proven technique. So the how can we take it into hybrid mode? So we can give a practice. We can give a practice for face-to-face mode. We can talk in the psychologically. We can give any psychological guidance. We can go for online mode, and we can give a lot of physical activities through a face-to-face mode sometime. And after some time, we can judge their performance through online mode. So we have a lot of opportunities to take it into hybrid mode, but especially for psychological aspects, we should teach in the face-to-face mode and take it into online mode whenever we want. Especially for general public, we should develop a lot of online, lot of e-contents, lot of videos. What are the benefits of physical activities, especially for psychological benefits? Then only the public will recognize our physical activities due to, in especially for our the time of a pandemic or any emergency purpose, and they will take it their lifestyle, because everyone don't want to develop their physical fitness. A sportsman can want, a youngsters can want, and other defense people, they can want to develop their physical fitness very hard. But when we compare with the normal sedentary people, they don't want to develop a lot of physical fitness. They are in sedentary life. They want to go for their daily routine life, but they want to reduce their stress. Everyone want to reduce their stress. So what is our contribution? Physical education department contribution. So we should cultivate, we should tell, we should deliver lecture, we should give lot of e-content. What are the benefits of psychological benefits when will we be in the part of physical activities and sports? So we should tell for a sportsman, we can teach in the face-to-face mode, then we can transfer into online mode. So these are all the psychological aspects, and these are all the substances and the hormones are secreted in our body when we are in the regular physical activities. A lot of evidences are there. So psychological benefits, theoretically, we need not to tell you when we will be in the sports, you can get these benefits because we have a lot of evidences are there. So definitely we can go for hybrid mode. And this is the video I want to show you how the psychology play a very vital role mingle with physical activities. Kindly see this video. I have downloaded it from it.
सर वीडियो का वॉइस नहीं आ रहा है. Thank you for watching this video. Actually, through this video, I would like to convey some message. The line like COVID-19 or life problems or whatever may be, always we have a problem. And how can we overcome it? If you have a good fitness, physical fitness and mental fitness, definitely we can overcome it. Who can get this opportunity? Lot, a sportsman and a physical educationist. And as a physical educationist, we should provide the opportunity to the everyone. So we should cultivate what are the benefits of physical activities, what are the psychological advantages of physical activities among the people. It is in our hand. As a physical education professionals, we have to develop, we have to inculcate, we have to advertise. And how can we do that? So I have some ideas that is called as implementation. Actually, in our institution, I am working in Ramakrishna Mission Vidyalaya. It consists of 18 educational institutions from the school to university. We have nearly 7,000 students. After the COVID-19, we have started that is called as Fit Vidyalaya. Our institution is Vidyalaya. So Fit Vidyalaya. So we have developed a separate and specific physical education curriculum for everyone. So in this, from this academic year, we are going to implement, we are going to adapt physical education classes compulsory for everyone. And we are going to give a different type of physical activities according to their level in a proper progression in a scientific approach. So through that, we are going to convey what are psychological advantages, what are psychological benefits when you are in the physical activities. So if, everyone cannot be a good sportsman. They need not to come for a physical education profession, but they are going to live their life. So when you're going to live life, they are going to face a lot of difficulties, a lot of problems, and there are a lot of challenges, and how they can overcome. So if you provide the physical activities, easily they can overcome all the problems and challenges. So first, welcome more innovative ideas. How can we implement a hybrid mode, especially psychology, sports psychology? Welcome more innovative ideas from our physical education professionals. We should invite a lot of ideas. And the sports for everyone on schools, colleges, streets, villages, all the festivals, religious festivals, spiritual festivals, and local festivals, everyone, wherever we have a gathering, we should organize a sports. It may be different type of sports we can organize. And life activity, we should mention sports and physical activities is one of our life activity, how we are doing our life, daily routine activity. In same way, physical activities also one of the activities. And portable equipments, we should cultivate, and we should have a research for portable equipments, because when we do the gym equipments, when we want to do the fitness centers, so we should develop some of the portable equipments. Like we have now mat is there, yoga mat is there. For stretching, we are doing, we are keeping mats. Likewise, we should develop a lot of portable equipment. Like a TheraBand, we have a TheraBand, small type of weight plates. Likewise, we have to develop a lot of portable equipments and create awareness. We have to create awareness among the people, and the sports science inculcation. Because I already have mentioned in this first slide, because what we are giving only for our physical expression we are giving. Unfortunately, we are not focusing our psychological aspects in the physical education field. We should cultivate, we should tell everyone, when we be in the
physical activities, we can get the physical benefits and also we can get the psychological benefits also. That creativeness we have to develop. And the sports science, what are the sports science are applying in the physical education when in the sports activities? Simply we are thinking that the sports skills, like if you take any game, for example, if you take a football, simply we are thinking that dribbling, kicking. And apart from this, we have a lot of science subjects are applying, especially sports psychology and exercise physiology, kinesiology, biomechanics, sports nutrition. Lot of sciences are applying. We should tell, then only the people will come to the physical education sports field, then they can get the psychological benefits. Simply they cannot get. Without the science background, anyone will not come. So if you tell the science background, everyone will come to our physical education field. It may be a face-to-face mode, it may be a online mode, whatever may be. So definitely we can go to our hybrid advantage and showcase the psychological advancements everywhere. Wherever we are showing the physical development, in same way we have to show our psychological development also. This is our hand. This is a free medicine in our hand. So definitely we should give to the society. And so we are all in physical education professionals. We should inculcate, we should give the maximum amount of psychological benefits through participation in sports and physical activities. And dear participants, do you have any doubt regarding this? Now you can ask. Thank you very much for your patient listening. Due to lack of time, I could not go forward because I have time only 10:45. I have taken up to 11 o'clock. Thank you very much for providing this wonderful opportunity to participate in the resource person in the national conference. Thank you very much, everyone. Thank you. Sir, so any questions are there? Any clarifications are there? If any question, you can send in YouTube. If any doubt, you can send in chat box. Any question? Then Dear participants, you can send it by chat box. sir, yes, sir. Are you listening me? Yes, sir. Yes, yes. Sir, my question is in our college is the physical education college. Okay. There is running BP, BP, and MP courses. Okay. Okay. In pandemic situation, many students are giving online mode exam. Their Yes. physical fitness, mental fitness is affected during practical exams. So, sir, give me any
any good suggestion for after pandemic? What will he do to increase his mental fitness? Sir, actually, because we are in the field of physical education, so what tendency we have, because every time we try to play in a face-to-face mode, because it is our attitude. We play, we cannot play for any online mode. So our tendency is to go to ground and play regularly. And exam also, we are written only in the face-to-face mode only, written exam only. We did not have this tendency. So automatically our students may get the problem. I think not for the exam purpose. I think they would not go for practice regularly. This is maybe a big mental issue, mental problem will be there. But after the COVID-19, they should involve regularly in the physical activity. Automatically, we can get the good solution, because it is a very temporary. Online exams are temporary. Our sports and are the permanent. So as a physical education teacher, as a sportsman, we should develop this attitude. This is also one of the fighting spirit. How we are challenging the tournaments and competition. In same way, we should adjust and we should adapt, and we should uh, 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 we should take it as one of the situation, and we should adapt. That's all. We should develop our confidence. We should get some solution. So automatically the tension, stress will go down. Regular practice, that's all. Because this is our daily food. Like, It's okay, sir. Thank you. I will conclude this first session. Dr. M. Srinivas sir is giving lecture mental fitness through physical activity. He was given detailed knowledge about fitness, wellness, stress management, attitude, and this is very useful in physical education, student, teacher, and other field person, because many persons are suffering this pandemic situation in mental fit. Sir, our is very thankful given institute. Sir, thank you. Thank you very much, sir. Thank you for this opportunity. Thank you very much. Now, Thank you, sir. we will start second session. I will give to I will over to give my Miss Rameshwari Sahu. He will give the detail about second session, second technical session detail. Hello everyone. Now I'm starting. It's honest for me and I get a chance to introduce you to our Sunita B. John, Head of Physical Education Department, Sam, Indian Coordinators of Agricultural Technology and Science, Banana Raj. We are educated students of Sunita B. John, one permanent in triple and single medal in ever two in the second in master in held on April 2022 at Tiger Stadium, Delhi. We are fortunate to have you. In this, Halo Master team participates from 21st State and Union Territories participating in 8 different products of the Sunita organization throughout the country with her excellent performance. Even before this, she has admitted the name of organization and national levels. Now, I would like to ask you that please shower your knowledge on us, inspire us from your words, experience, and knowledge. You are much valuable for us.
I said, first, earlier itself I said, what is our aim? To bring awareness among people regarding our physical health or regarding our health. So we all know healthy body plus healthy mind is equal to happy human, right? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, आधा घंटा सुन लीजिए, बहुत ध्यान इसका सीधा संबंध मानव से। अच्छा हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ फिजिकल और मेंटल दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि अगर फिजिकली फिट है तो सब कुछ कर सकता है, हम मेंटली फिट है तो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये मान लो कोई फिजिकली बहुत फिट है और मेंटली अनफिट, हम उसको हेल्दी नहीं कह सकते। या यदि कोई मेंटली फिट है और फिजिकली अनफिट है तो ये कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे पर ये एक सर्कल है, फिजिकल और मेंटल इट्स लाइक सर्कल। यदि हम सर्कल को ब्रेक करते हैं तो जो फ्लो है वो टूट जाता है, यानी फ्लो लाइन टूट जाएगा। फ्लो लाइन क्या है? इज द बैलेंस भाई ये सब सत्यानाश करते था, सत्यानाश या जो जीवन के जो मायने करते हैं उसके हम फिजिकल को फाइनली करना है, तो जिन चीजों पर हम ध्यान नहीं देते वो हमारा बीइंग चलेगा, मतलब वो एस्पेक्ट हमारा बीइंग है। यदि कोई मशीन है वो बहुत मॉडल है, अगर उसको हम सारा चीज बंद कर दें तो क्या होगा? पहले की तरह फंक्शन कर पाएगा? हम जब परिस्थिति आते हैं तब परिस्थिति ये सबके को खुशी तो जब हम यूज करते हैं उसके बड़े हमारा स्मूथली नहीं करते या कोई भी सिस्टम फंक्शन प्रॉपर नहीं करता क्योंकि वो बहुत देर से बंद रहता है, तो पूरा फंक्शन के वो हमें क्या आप बंद करें और सबका बेटा कर दो। अभी स्विच फैन चलाना है, हमें क्या करना है? स्टॉप करना है, फैन चलाना तो रिमोट भी आता है। हमें क्या कुछ भी नहीं ना हो तो हमें चलने की जरूरत नहीं है, हम कहते हैं जैसे रिमोट चला तो हमें काम हो जाएगा। पहले मोबाइल आता था तो कीपैड वाले हम उस बटन को यूज करके टाइप करते थे, अब क्या है उसमें ऑटो टाइपिंग का भी मोड आता है, तो बस मुंह से बोला वीडियो से जाने की जरूरत है, सिर्फ मुंह से बोलना जिस लैंग्वेज में चाहिए वो उस लैंग्वेज में टाइप कर देगा। हम बस यही चाहते हैं कि आप बन कर हमारा सब कुछ फटाफट हो जाए, मतलब नेचर हमें किसी एक तरह से आगाह करते हैं। यदि हम फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान रखेंगे तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? जंग लगेगा, और जंग लगेगा शरीर में जंग लगेगा तो जैसे हमारा ब्रेन कैसे कार्य करेगा? सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है?
सॉफ्टवेयर का वैल्यू कभी हार्डवेयर उसकी सपोर्ट में मतलब हमारा माइंड जो है इट्स लाइक सॉफ्टवेयर, हमारा बॉडी जो है इट्स लाइक हार्डवेयर। इतना भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, अगर आप सपोर्टिंग हार्डवेयर का आपका सपोर्ट नहीं है इट्स नो यूज, हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो हम जाने अनजाने क्या करते हैं, फिजिकली हम बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। आजकल क्या है, फिजिकली बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं और टोटली हम किस पे डिपेंडेंट है, मेंटली डिपेंडेंट है। सारा लोग हम ब्रेन पर डिपेंडेंट है और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फिजिकली फिट रहें, सारा लोग ब्रेन को दे रहे हैं और फिजिकली हम बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। ब्रेन पे कब कार्य करेगा, अच्छे तरीके से तभी काम करेगा सोशल सर्किल है वो हैक होना चाहिए, राइट? हम सभी उसको एक्सपीरियंस करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें दे रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के साथ हैं तो हमारा सोशल बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं तो कम हो रहा है। सब टोटली मतलब ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी किसी भी चीज का एक्सेस यूज अच्छा नहीं होगा, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो और उसमें या ओवर करेंगे वो भी हमारे लिए नुकसान है। अगर हम टेक्नोलॉजी के उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। किसी भी चीज का एक्सेस यूज नुकसानदेह होता है। यदि कोई व्यक्ति फिजिकली फिट नहीं है तो उसे क्या होता है, उसके माइंड को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी या सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो अपने काम पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाता, ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो जहां उसका फिजिकल फिटनेस जिसके लिए उसका फिजिकली फिट रहना बहुत ही जरूरी होता है। अगर वो उस तरह से अगर WHO क्या कहता है फिजिकल एक्टिविटी को लेकर कि यदि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी स्केलेटल मसल के द्वारा किया हुआ कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपका एनर्जी खर्च करने की आप जरूरत हो वो फिजिकल एक्टिविटी में अंतर्गत आता है। चाहे वो आप काम कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो, किसी भी तरह का अगर एक्टिविटी करते हैं फिजिकल। अब फिजिकल हमारा बॉडी क्या करता है, यदि हम वीक है, अगर हमारा बॉडी वीक है तो हम कौन कमांड करेगा, हमारे ऊपर हावी कौन रहेगा, ठीक है? यदि हमारे अंदर बॉडी से स्ट्रांग है हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एक्टिविटीज को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, राइट? वीकर द बॉडी मोर स्ट्रांग एंड स्ट्रॉन्गर द बॉडी बेटर रिकवर। अगर हम स्ट्रांग हैं सारी चीजें हमारे कंट्रोल में रहती हैं। फिजिकल एक्टिविटी का इंपॉर्टेंस आप सब लोग जानते हैं, फिर भी हम ये बताना चाहेंगे कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्पेशली कोविड की दौरान हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग
लगे जिनसे उनको ये डर होता था कि अगर वो और देयर आर चांसेस टू गेट इन्फेक्टेड। तो हमारा इम्यून सिस्टम को ये जो क्रिटिकल एक्टिविटी करते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, कैसे हेल्प करता है, हेल्प टू कीप योर इम्यून सिस्टम वर्किंग इफेक्टिवली। जब क्या करता है, कैसे इफेक्टिव करता है, हमारे अंदर जितने भी बैक्टीरिया है हमारे लंग्स में उसको फ्लश आउट करने में वो हेल्पफुल होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज सपोर्ट द इम्यून सिस्टम में एक जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके थ्रू वो सपोर्ट करता है। बेटा जिन्हें बात करना तो बाहर चलेगा, ठीक है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम किससे बना है, लिम्फेटिक सिस्टम इज consists of a complex network of vessels, tissues and organs that can be thought of as a drainage system। हमारे जो lymphatic system है वो vessels, tissues, organs सबसे मिलकर बना है। It's like a drainage system। वो क्या करता है, it collects, transports and filters excess liquid जो भी हमारे blood में collect हो रहा है उसको निकालने में हमारे airways में जो आ रहा है उसको निकालना करता है। एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फास्ट होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट होता है, अच्छे से मूव करता है। उस वजह से जो भी हमारे टिश्यूज में डिपॉजिटेड है से वो फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। हमारे जो ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, उसको इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर को वो रेज करता है, राइट। हमारा बॉडी टेम्परेचर को रेज करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो टेम्परेचर रेगुलेशन सुना है। जब हमारा बॉडी हीट होता है और वहाँ बहुत ज्यादा गर्म है, उस टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करेगा, हमारे बॉडी में पसीना निकलेगा, वो पसीना हमारे शरीर से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको भी ड्रेन आउट करने में हेल्प करता है। और टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो तवा में क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के बीच जो गर्म होता है और पसीना भी हमारे टेम्परेचर को हीट को मेंटेन करके रखता है। उसको बहुत ज्यादा एक्सेस ये क्या होगा, अगर गर्म ज्यादा तो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, आपके मूड को अच्छा बनाए रखता है। जब भी हम कभी स्ट्रेस में रहते हैं हमारा स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है। जब भी हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं उस समय अगर हम फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, किसी भी तरह का तो आप जो भी काम करेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, कुछ भी कोई नौकरी कर लीजिए, कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप वहाँ पर अपना स्ट्रेस को स्ट्रेस को वहाँ निकालते हैं। So when you are doing exercise, at least WHO कहता है minimum 20 minutes का exercise, 20 to 30 minutes का exercise आपको करना रोज जरूरी है। मतलब 120 minutes of exercise per week adults के लिए बोलते हैं ना, इतना एटलीस्ट हमें करना जरूरी होता है। और हमारे जो डायबिटीज है, बीपी है, सबके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है एक्टिविटी या एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं कुछ नहीं तो वॉकिंग करते हैं जिससे कि आपका सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। आपका जब हमारा सर्कुलेशन अच्छा होता है हमारे शरीर के जो आर्टरीज और वेन्स कहाँ करते हैं, सांस शुरू हो रहा है हमारे बॉडी पार्ट पर। अगर ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं होता है हमारा फंक्शनिंग जो एक सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो सब जगह पूरे एक कोने से दूसरे कोने तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, आपके वाइटामिन्स न्यूट्रिएंट्स सब पहुंचना चाहिए। अगर सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो वो कहीं तक पहुंच नहीं पाएगा, सारे जगह को वो न्यूट्रिशन दे नहीं पाएगा। न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, हमारे ब्लड के थ्रू, राइट। जो हमारे जो खा रहे हैं हमारे पेट के साथ वो वाइटामिन्स हर जगह ऑक्सीजन सब जगह जाता है। अगर हमारा एक्टिविटी के लिए तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, हमारे
हमारा सिस्टम का फंक्शनिंग बहुत अच्छा रहेगा। हमारे इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत सपोर्ट करता है, बहुत इम्प्रूव करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो इमोशनल और मेंटल हेल्थ है वो क्या करता है, वहाँ पर क्या आता है, इट्स इक्वल टू स्टडीज कहता है कि एक्सरसाइज हैज एन इक्वल इफेक्ट एज एंटी डिप्रेसेंट्स इन पीपल सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके ब्रेन से कितना इफेक्टिव है। जो एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स होते हैं ना, वो डिप्रेशन में लेते हैं, वो उसमें भी आपको सपोर्ट करता है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे अंदर जो फील गुड हार्मोन्स है, केमिकल्स है, वो निकलता है, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ये सब हार्मोन सीक्रेट होता है, वो हमें अच्छा फील करने में हेल्पफुल होता है। चाहे वो आप डांस कर रहे हो, चाहे एरोबिक्स कर रहे हो, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और दैट हार्मोन सोशल कनेक्शन हमारे हम अगर अच्छा फील करें तभी हम लोगों के साथ मिलते हैं। अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है तो हम लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते, सोचते हैं ना कि हम अकेले कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जब हमारे when we feel good, हमारे अंदर से अच्छा लगता है, then only we go out meet with people, social जो सर्कल में हम कभी जाना पसंद करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं या एक्टिविटी करने के बाद क्या है, हम बहुत अच्छे से सोते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी में जितना थकान है वो निकल जाता है, बहुत आराम से हमारे पास स्ट्रेस रहता है उस समय, क्योंकि हम अपना स्ट्रेस सारा काम निकालते हैं, फिर निकालिए या जो भी एक्टिविटी में पसंद है उसमें करके वो एक्टिविटी में हमारा स्ट्रेस और वो सब निकल जाता है, तो बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं कि हमें गुड स्लीप, हमारा जो स्लीप आता है वो भी इम्प्रूव होता है। स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस होता है, क्योंकि ये मूड बूस्टर है, हमारा मूड अच्छा करता है। जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं तो क्या करता है, जब हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम कहते हैं, जैसे जैसे ओल्ड हो रहे हैं हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते। लोगों का जो मिथ है, जो धारणा है, जैसे ओल्ड एज में जाते हैं तो कोई स्ट्रेंथ एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गलत है। जब भी हम ओल्ड हो रहे हैं या एवरीडे कौन हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारा मसल्स। अगर हमारे शरीर में मसल्स नहीं रहेंगे तो हम अपने अंदर हमारे को ताकत कहाँ रहेगा, खड़े रहेगा, चाहे वो ओल्ड एज में हो चाहे वो यंग एज में हो। अगर आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिम करना, यू कैन डू एक्टिविटीज विद योर वेट। हम अपने वेट को यूज करके भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो बिना इक्विपमेंट के भी हो सकता है और इक्विपमेंट के साथ भी हो सकता है। लाइक जब हम बिना इक्विपमेंट के तो स्क्वाट्स कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, सिटअप्स कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्ट्रेंथ बना रहे। और अगर हम वेट ट्रेनिंग की बात करें तो हम डंबल्स यूज कर सकते हैं। जो ओल्ड वो भी मसलों वेट में देखना है, आप वन केजी डंबल्स आते हैं तो दे कैन यूज दैट फॉर जितनी कैपेसिटी है जो हैंडल कर सकता है। हाथ की यूज करना, हाथ की यूज कर सकता है, जो वन केजी यूज कर सकते हैं उसको वन केजी का देना से, जिससे उनका मसल्स बिल्ड हो, ताकि वो ओल्ड एज में भी वो मतलब जब वो में है या 60s में तो भी उनको क्या उसके ऊपर है, तभी उनके अंदर स्ट्रेंथ बनना है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े रहे और अपना एक्टिविटीज जो भी उनके रिक्वायरमेंट है वो बिना डिपेंडेंसी के वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे जिनके पास डंबल्स नहीं है या इक्विपमेंट खरीद नहीं सकते, लेकिन हम करके भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम ऑयल कैन है या तो उसमें सैंड कर दो, इजी बन रहा है।
ऑयल कैन से या उसको पानी भर लो या सैंड भर लो, जिससे कि आपका वेट उसको मेजर कर लीजिए, उसको यूटिलाइज। सो जब भी हम जो हमें इतना एक्सरसाइजेस क्या करता है, जो भी फिजिकल एक्सरसाइज क्या करता है, हमें वेट गेन करने या एक्सेस गेन करने गेन करने में उससे हमें बचाव करता है, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है और हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और हमें वेट रखता है, जिससे कि हम सारे एक्टिविटीज को अच्छी तरह कर सकते हैं। हमें बीमारियों से दूर रखता है, हमारा स्लीप पैटर्न को अच्छा रखता है, ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज को, शुगर लेवल को, हमारे बॉडी को सबको मेंटेन किया रहता है, जिससे कि हम फिजिकल एक्टिविटी सो यू कैन यूज सोशल मीडिया के, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू भी आप बहुत सारे, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, जैसे ऑनलाइन कोर्स भी चले जाते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन मोड्स हैं जहाँ से आप एक्सरसाइजेस को देख के कर सकते हैं। यदि आपको आता है आप अच्छे से करिए, मतलब हमें लाइफ में हमारे हैबिट, जैसे कि ना ब्रश करने के लिए कोई सिखाता नहीं है, हमें ब्रश करने के बचपन में एक बार बता दिया, हमारे हैबिट में ब्रश करना है, राइट, हम ब्रश ऑटोमेटिक करते हैं क्योंकि हमें पता है कि उससे क्या करना है, वो हमारे हैबिट में आता है। तो वैसे ही हमारे हैबिट में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज बहुत मस्त है। एक्सरसाइज आधा घंटा, मैं कहती हूँ ये नहीं कहती कि दिन भर एक्सरसाइज करते, हाफ एन आवर में एक्सरसाइज आप अपने लाइफ में अपने हैबिट में लाइए, जिससे क्या हमेशा हमेशा के लिए एक जो रूटीन में आपने आना चाहिए कि एक्सरसाइज करना, आप एटलीस्ट आना, ये एकदम मस्त है। जैसे हमारे ब्रश करना, नहाना एकदम इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे रूटीन में, हमारे हैबिट में एक्सरसाइज ऐसा मस्त, हम चाहे वो मेडिकल एजुकेशन के हो, चाहे आप नॉर्मल बैचलर से लेबर से हो, everyone should involve physical activity as in their routine, जैसे बच्चों के लिए कहते हैं, छोटे बच्चों पर, छोटे बच्चे तो दिन भर खेलते हैं, इतना एनर्जी लेवल रहता है, अगर हम उनको बांध के रखें, घर के अंदर बांध के रखें, तो वो क्या करते हैं, अगर उनका एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, अगर उनको बाहर नहीं निकालते, लंबे मारने नहीं देते, तो वो क्या करते हैं घर पे, कभी देखा है आप लोग किसी के यहाँ, हम सभी क्या होता है तोड़ करते, मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, थोड़े कुछ करें, मतलब कुछ ना कुछ तो करना। छोटे बच्चों को अगर उनको हम घर के अंदर ही बंद करके रखते हैं, तो क्या करते हैं, ये दूसरे लोग करते रहते हैं, और पेरेंट्स को शिकायत कर रहे हो, ये छोटा है, इसलिए करके हर जगह शिकायत, क्योंकि उनको एनर्जी इतना ज्यादा रहता है, वो दिन भर तो कभी एक जगह नहीं रहते छोटे बच्चे को। जो 3 to 2 वाले वो तो उनके जो प्रीवियस एक्टिविटी तो वो मतलब वैसे नहीं करेंगे, तो दिन भर वो एक्टिव रहते। 5 साल के बच्चों में क्या है, उनको 180 मिनट से के ऊपर एक्टिविटी, मतलब इतना टाइम उनको एक्टिविटी देने चाहिए। 5 से 17 साल के बच्चे, डब्ल्यू एच ओ कहते हैं 5 से 17 साल के बच्चों को एटलीस्ट 60 मिनट से दे, और वो फिजिकल एक्टिविटी में या एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो सके, किसी भी चीज में इन्वॉल्व होना जरूरी है, जिससे कि उनका एक्टिविटी लेवल या उनका एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सके। 18 से 64 इयर्स के लिए कहते हैं 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए पर वीक। हफ्ते में 150 मिनट्स का कम से कम उनका फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, और एटेंडेंस 65 है एंड अबव है, उनकी भी होती है कि 150 ऑफ इंटेंसिटी मॉडरेट इंटेंसिटी का एक्सरसाइज उनकी भी फॉलो, जिससे कि उनका फिजिकल एक्टिविटी बना रहे, उनका फिजिक्स बेहतर हो और वो डिपेंडेंट ना रहे, और उनका वो हर काम खुद से कर सके और बीमारियों से दूर रहे। और जब कोविड की सिचुएशन में और लर्न टू इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटी, ऑलमोस्ट सभी का ये था कि सबने सीखा है फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है। शुरू में हमने बताया कि फिजिकल
giving me this opportunity and inviting me as a resource person. Thank you, sir. थैंक यू। आपके द्वारा दी गई बहुत ही शानदार शिक्षा आपके व्याख्यान से जरूर आज से बहुत अच्छी चीज की कैसे बच्चा कर सकता है हैबिचुअल हो जाता है काम को करने ठीक उसी प्रकार से हमें अपने शरीर गतिविधियों को करने के लिए हैबिचुअल होना पड़ेगा। We are not own body and religion. आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? सिर्फ बोलते हैं करते नहीं, ठीक है? जबकि सबसे ज्यादा अगर आपके कंट्रोल में कोई है तो सिर्फ आपकी बॉडी, उसके अलावा और कोई भी नहीं। जितने क्लोज रिलेशन में भी व्यक्ति होंगे वो आपका कंट्रोल में है, आपका स्टूडेंट जो है वो भी कंट्रोल में नहीं। तो जो चीज आपके कंट्रोल में है, जैसे किसी ने कहा है कि हमें पास्ट और फ्यूचर की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हमें करनी चाहिए किसी प्रेजेंट में, क्योंकि वो आपके हाथ में, वर्तमान आपके हाथ में, भविष्य आपके हाथ में है और पास्ट जो है वो खत्म हो गया। तो उसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो जल्द ही परेशान। तो आपको सिर्फ अपने शारीरिक गतिविधियों को कहा जाता है सबसे बड़ी संपत्ति आपकी है आपका स्वास्थ्य। आपने इस पेंडेमिक कोविड-19 पीरियड में देखा भी होगा, जिसने अपने शरीर से प्यार किया, उनके प्रति एक्टिव रहे, अवेयरनेस रहे, वही अपनी जिंदगी बचाई। और इन्होंने कोई भी सीखी, लापरवाही की, है ना, उनका आपके सामने इसलिए सुनीता मैम ने बहुत अच्छी बात की, आपको अपने शरीर के प्रति एक्टिविटीज कितनी करनी चाहिए, है ना? टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने बहुत बताया कि किसमें कितने कैलोरी होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो बड़ी अच्छी बात होती है कि हम शारीरिक शिक्षक में जैसा बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है? ऐसी शिक्षा जो शरीर के माध्यम से की जाती है, ठीक है? अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आपको क्या किया जाता है? ऐसा नहीं कि आप खड़े होते हैं, डॉक्टर आपको फिजिकल आदि फिजिकल और मेंटल फिट दिया होता है, तो वो आपको एक्टिविटी से पार्टिसिपेट करता है। अदरवाइज यही आउट दिस ऐसा। तो इस गतिविधियों को करने के लिए आपका शरीर साथ है, आप उन गतिविधियों को कर सकते हैं। और उन गतिविधियों को एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रोज खाना खाते हैं, ठीक है? उसे हम अपना हैबिचुअल हैबिट्स को लानी पड़ेगी। और आपकी जिम्मेदारी अपनी है कि आप इस क्षेत्र में आगे से तो सिर्फ अपने लिए, अपने साथ साथ हमें घर परिवार, समाज और देश के लोगों को भी अंदर करें। बड़ी दूसरी बात होती है कि हमारे यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है, आज हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हमारे यहाँ समस्या पहले आती है, उसके बाद सॉल्यूशन का होगा ये खोजते हैं। अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम ही है ऐसा क्या है, इसको विचार किया। हमारे यहाँ क्या होता है, बिल्डिंग ज्यादा बनती है और क्या पार्किंग होती है। हमारे यहाँ पेड़ों को काटा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर उनके यहाँ पेड़ लगाए। और इसलिए आपने देखा होगा रिसर्च है कि हर व्यक्ति आज के किसी
बीमारी से ग्रसित है। और वो बीमार व्यक्तियों को अगर आप अपने घर में देखें, रोज अगर 10 रुपए की भी गोली खाते हैं पर डे, जैसे प्रमाण केसेस हो गए तो सोचिए कि आपके अपने घर में ही जितना आपका बजट है उससे कहीं ज्यादा आता मेडिसिन। अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए पढ़ने के हिसाब से, अगर हमारे देश जनसंख्या 125 करोड़ है, उसमें से अगर 50% भी दे रहे हैं, जो कि नहीं है, इससे ज्यादा जैसे हमारे सुनामी है ना, 12 व्यक्तियों की संख्या जो है, अगर रोज हर व्यक्ति 5 रुपए की भी गोली खाता है तो डिवाइडेड बाय पर डे कितने मिलियन हो रहे हैं, और डिवाइडेड बाय अगर मंथ का करें और साल का करें तो उसकी संख्या जो है जितनी आप नहीं गिन पाए, तो वो सारे पैसे कहाँ जाते हैं, इतनी मेडिसिन कंपनियां से कहाँ दी फॉरेन में। तो एक इतना बड़ा अमाउंट जो एक बता हम विदेशों में भेजते हैं, वही चीजें अभी सुनीता मैम बता रही कि अगर आप फिजिकली एक्टिविटी अपने लिए भी एक वर्ष में उन्होंने अभी किया है कि अगर आपको नौकरी है तो आपको आप अपने लिए रोज का सिर्फ आधा घंटा भी निकाल, 1 घंटा भी निकाल तो काफी बड़ा है। और इससे आप हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। तो जो फिजिकल फिटनेस रहेंगे तो मेंटल फिटनेस, जैसे मैडम ने बताया कि फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर इस टाइम को आपने यहाँ आकर हमारा गौरव है, तो आपको इस सार्वजनिक अच्छे उद्बोधन के लिए और conference में आज पहले सेकंड मिस्टर श्रीनिवासन जी का सेशन
पैसा कमाने में मदद करेंगे और आशा करता हूं तीनों मिलकर हमारे छात्रों को पैसा कमाने में आगे मदद कर सकेंगे। इसी के साथ